Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In previous lecture we were discussing about gene therapy. In this video we will continue our discussion on the same topic, and today we will discuss the vectors for gene transfer and the subsequent problems associated with gene therapy. So there are two types of vectors that can be used for gene transfer. One are called as viral vectors and the other one are called as non-viral vectors. So let's discuss the general considerations first, that how these vectors are used for gene transfer and why. Preparations for gene delivery are colloidal suspensions consisting of complex molecules with average hydrodynamic radii ranging from 40 to 1000 nanometers. Particles of this size are readily taken up by organs of the reticuloendothelial system, such as the liver, spleen, bone marrow, and adrenal glands, and efficiently cleared up from the circulation. They are also highly susceptible to opsonization, where they are coated with serum proteins which as complement and taken up by macrophages in the liver and spleen within minutes after intravenous administration. Conjugation of vectors with biodegradable polymers has been shown to successfully prevent interaction with the reticuloendothelial system and serum components. However, this effect is often avoided by instillation of the vector directly into the target organ or tissue. Even though a vector is administered by direct injection, it still must overcome certain epithelial barriers designed to restrict entry of macromolecules into the target tissue or organ. Cells lining the organ surface are often covered with a thick mucus layer that physically prevents contact with cellular targets and contains enzymes capable of rapidly degrading the vector. Cells under this layer are often ciliated and form tight junctions which restrict entry. Many vectors carry a negative charge on their surface, making interactions with the cell also negative, which are also negatively charged, difficult. Use of cationic compounds and mucolytic agents to facilitate cellular interactions and hypotonic formulations to disrupt tight junctions and enhance cellular penetration has successfully enhanced gene transfer. Once a vector enters a cell, it must next escape to the endosomal or lysosomal environment. Some vectors have been administered with compounds that swell within the acidic endosomal environment and protect the genetic material from exposure to significant changes in the pH and enzymatic digestion and promote vector release. Others have used inactivated virus as well as specific components from bacteria, viruses, and toxins that promote endosomal escape. Once in the cytoplasm, the vector must successfully reach the nucleus, where it can use the cell's endogenous transcriptional machinery to express the therapeutic transgene. To accomplish this, non-viral and viral gene vectors are used. So, gene डिलीवरी की जो प्रिपरेशंस हैं मोस्टली वो कोलॉइडल सस्पेंशंस होती हैं. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें विद एवरेज हाइड्रोडायनेमिक रेडियाई रेंजिंग फ्रॉम 40 to 1000 nanometer. इस साइज के particles are readily taken up by organs of the reticuloendothelial system, जैसे कि liver है, spleen है, bone marrow है या adrenal glands है, और ये efficiently clear होते हैं from the circulation. ये highly susceptible होते हैं opsonization से, जहाँ पर suspended particles coated होते हैं with serum proteins, और ये कॉम्पोनेंट्स ईजीली टेकअप किए जा सकते हैं मैक्रोफेजेस के थ्रू, जो कि लिवर में, स्प्लीन में प्रेजेंट होती हैं विद इन मिनट्स आफ्टर इंटरवेनस
virus administration. Conjugation vectors की with biodegradable polymers प्रिवेंट करती है इस इंटरेक्शन को जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम और सीरम कंपोनेंट्स में हो रहा है. However, ये जो इफेक्ट है ये अवॉइड किया जाता है बाय इंस्टिलेशन ऑफ द वेक्टर्स डायरेक्टली इनटू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज. इवन दो वेक्टर डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, it still must overcome certain epithelial barriers which are actually designed to restrict entry of macromolecules to target tissue or organ. Cell lining, the organ surface, जो organ surface पे cell lining है वो often covered होती है with thick mucous layer जो physically prevent करती है contact with cellular targets. And it contains enzymes जो कि rapidly degrade कर देते हैं वेक्टर को. सेल्स इस लेयर के अंदर मोस्टली सीलिएटेड होते हैं जो टाइट जंक्शंस फॉर्म करते हैं जो वेक्टर की एंट्री या जीन की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं. बहुत सारे वेक्टर्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं सरफेसेस पे. सेल की सरफेसेस के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज होता है जो इंटरेक्शन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं. कैटायनिक कंपाउंड्स और न्यूक्लियोलाइटिक रिएजेंट्स का यूज़ सेलुलर इंटरेक्शंस को फैसिलिटेट करता है और हाइपोटोनिक फॉर्मुलेशंस यूज़ की जाती हैं ताकि टाइट जंक्शंस को डिसरप्ट किया जा सके और सेलुलर पेनिट्रेशन को इन्हांस किया जा सके, देयरबाय सक्सेसफुल जीन ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी हो सके. जैसे ही वेक्टर सेल के अंदर एंटर होता है तो उसे एंडोसोमल या लाइसोसोमल एनवायरनमेंट को एस्केप करना होता है. कुछ वेक्टर्स को एडमिनिस्टर किया जाता है विद कंपाउंड्स जो इजीली स्वेल हो जाते हैं विद इन दी एसिडिक एंडोसोमल एनवायरनमेंट और वो प्रोटेक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल को सिग्निफिकेंट चेंजेस के एक्सपोजर से जो पीएच या एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से हो रही होती हैं, जिसकी वजह से वेक्टर रिलीज प्रमोट होती है. कुछ वेक्टर्स में इनएक्टिवेटेड वायरसेस यूज़ होते हैं जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बैक्टीरिया के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स या वायरसेस से या टॉक्सिन से लिए जाते हैं जो एंडोसोमल एस्केप को प्रमोट करते हैं. जैसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वेक्टर तो वेक्टर को सबसे पहले न्यूक्लियस में पहुंचना होता है ताकि it can use the cell's endogenous transcription machinery to express the therapeutic transgene. In order to accomplish all these goals, there are two types of vectors which are used for gene transfer, non-viral and viral gene transfer vectors. So, let's discuss about the general anatomy and production of a gene transfer vector. A gene-based medicine typically consists of an expression cassette made of cDNA flanked by a promoter on the 5' end and a transcription stop and polyadenylation site on the 3' side. This is incorporated into a DNA plasmid or a recombinant virus based upon therapeutic requirements. The gene responsible for the pathogenicity of the viral vectors are removed and replaced with the expression cassettes in order to limit the virus reproduction and fulminant disease. In many vectors, all that remains of the original virus genome are long terminal repeats, LTRs, 5 and 3 terminal regions of the virus that control transcription for RNA viruses, or inverted terminal repeats, ITRs, identical but oppositely oriented sequences that drive DNA replication and stabilize the genome of DNA viruses. The package signal responsible for virus assembly is also kept intact.
Genes for replication are supplied in trans by a producer or packaging cell line for large-scale production. Virus biology will dictate the manner in which the recombinant vector is produced. Careful thought must go into the design of a packaging cell line in order to minimize overlap between sequence in the virus genome and the cell that dictate replication or pathogenesis. If substantial overlap exists, these sequences can inadvertently be incorporated in recombinant viruses by homologous recombination. And replication components, pathogenic virus particles will then be produced with replication deficient particles. Preparations are often screened for replication component viruses prior to clinical use. After production and harvest from a packaging cell line, recombinant vectors are purified, quantified, or titered. Traditionally, purification strategies have relied upon density gradient ultracentrifugation to separate the vector from cellular proteins. This process is laborious, difficult to scale up, and can reduce the effective titer of stock preparations by disrupting vector structure. Advances in column chromatography had mitigated these issues of many vectors, allowing them to be grown and purified to high concentration needed for human use. जीन बेस्ड मेडिसिन टिपिकली कंसिस्ट करती हैं एक एक्सप्रेशन कैसेट के ऊपर जो CDNA से मेड हुई होती है, जिसमें एक प्रोमोटर अटैच होता है ऑन दी 5' एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप को डाउन होती है और पॉली एडिनाइलेशन साइट होती है 3' के ऊपर। ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है इनटू अ DNA प्लाज्मिड और रिकॉम्बिनेंट वायरस जो कि थेरेप्यूटिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस करते हैं। जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है जेनेसिटी के लिए वायरस की, वो रिमूव कर दी जाती हैं और रिप्लेस कर दी जाती हैं विद एक्सप्रेशन कैसेट्स, ताकि वायरस की रिप्रोडक्शन को लिमिट किया जा सके और डिज़ीज़ की प्रोग्रेस को जो डिज़ीज़ वायरस की वजह से कॉज हो रही है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सके। बहुत सारे वेक्टर्स में जो चीज़ बचती है वो रेप्लिकेशन कंस्ट्रक्ट बचती है, जिसे हम लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स कहते हैं। ये 5 और 3 टर्मिनल रीजन्स होते हैं वायरस के, जो ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं RNA वायरसेस में, या फिर इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं लेकिन अपोजिटली ओरिएंटेड होते हैं सीक्वेंसेस में, जो ड्राइव करते हैं DNA रेप्लिकेशन को और स्टेबलाइज करते हैं जीनोम को DNA वायरसेस की। पैकेजिंग सिग्नल रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस असेंबली के लिए, इसको भी इंटैक्ट रखा जाता है। जीन्स जो रेप्लिकेशन के लिए यूज़ होनी है वो सप्लाई की जाती हैं इन ट्रांस बाय प्रोड्यूसर या फिर पैकेजिंग सेल लाइंस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर। इसमें वायरस बायोलॉजी ये डिक्टेट करती है कि किस मैनर से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रोड्यूस होगा। केयरफुल थॉट दी जाती है ताकि पैकेजिंग सेल लाइन को डिज़ाइन किया जा सके इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ओवरलैप। जो सीक्वेंसेस के अंदर ओवरलैप होगा वायरस जीनोम में और सेल के अंदर, जो डिक्टेट करेगा रेप्लिकेशन को या फिर पैथोजेनेसिस को। अगर सब्सटेंशियल ओवरलैप एग्जिस्ट करता है तो ये सीक्वेंसेस इनएडवर्टेंटली इनकॉर्पोरेट होते हैं रिकॉम्बिनेंट वायरस में बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। रेप्लिकेशन कंपोनेंट्स जो पैथोजेनिक वायरसेस के पार्टिकल्स के हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं विद रेप्लिकेशन डेफिशिएंट पार्टिकल्स, और इन प्रिपरेशन को स्क्रीन किया जाता है फॉर रेप्लिकेशन कंपोनेंट वायरसेस प्रायर टू क्लिनिकल यूज़। प्रोडक्शन के बाद ये हार्वेस्ट होते हैं फ्रॉम अ पैकेजिंग सेल लाइन। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स को प्योरीफाई किया जाता है, क्वांटिफाई किया जाता है और टाइट्रेशन की जाती है। ट्रेडिशनली जो प्योरीफिकेशन स्ट्रैटेजीज यूज़ होती हैं वो रिलाई करती हैं डेंसिटी ग्रेडियंट अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन के ऊपर, जो वेक्टर्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम सेलुलर प्रोटीन्स।
ये प्रोसेस लेबरस है और डिफ़िकल्ट टू स्केल अप है, लेकिन इट कैन रिड्यूस द effective titer of stock preparations by disrupting vector structure. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एडवांसेस ने मिटिगेट किया है कि इन इश्यूज़ को प्रिवेंट करें, thereby allowing them to grow and purify to high concentrations needed for human use. So what are the considerations in selection of vector? Given the diversity of diseases suitable for gene therapy, it is apparent that there can be no single vector that is appropriate for all gene transfer applications. The selection of an appropriate vector for gene delivery requires careful consideration of a number of factors, including the size limitations for transgene cassettes, transduction efficiency in therapeutic target, and ability to infect dividing or non-dividing cells, appropriate receptor present on target cells, duration of gene expressions required for treatment, long-term versus transient expression, integrating versus non-integrating vectors, necessity of temporal gene expression, inducible expression versus constitutive expression, and maximum threshold of vector-induced immune response and toxicity acceptable for the host. Purity requirements for the vector and ease of large-scale production, route and ease of administration, ability of the vector to protect the genetic material, and robustness and physical stability of the vector system. There are viral vectors. 4 different types of viruses are used as vectors, which are adenoviruses, adeno-associated viruses, retroviruses, herpes simplex viruses. We'll be discussing them in detail. So let's start with the retroviruses. Retroviruses belongs to the family Retroviridae, and the genetic material in retroviruses is in the form of RNA molecules, while the genetic material of the host is in the form of DNA. When retroviruses infect a host cell, it will introduce its RNA together with some enzymes into the cell. This RNA molecule from the retrovirus must produce a DNA copy of reverse transcription, and DNA must be incorporated into the genome of the host cell. This process is done by another enzyme carried in the virus called integrase, and the genetic material of the virus is incorporated and hence become part of the genetic material of the host cell. The host cell is now modified to contain a new gene. Retroviruses Retroviridae family से belong करते हैं. जेनेटिक मटीरियल retroviruses में RNA मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, जबकि जेनेटिक मटीरियल होस्ट सेल के अंदर DNA की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है. जब retroviruses इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को, तो ये अपना RNA इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में टुगेदर विद सम एंजाइम्स. RNA मॉलिक्यूल retroviruses में प्रोड्यूस करता है DNA की कॉपी बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और DNA इनकॉर्पोरेट होता है इनटू द जीनोम ऑफ होस्ट सेल. ये प्रोसेस एक एंजाइम के थ्रू कैरी आउट होता है जिसे हम इंटीग्रेस कहते हैं, जो उस वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटीरियल वायरस का इनकॉर्पोरेट हो जाता है या पार्ट बन जाता है जेनेटिक मटीरियल ऑफ होस्ट सेल का, and host cell is now a completely modified host cell which contains a new gene. So next in the class of the vectors used are adenoviruses. They are double-stranded DNA genome that cause respiratory, intestinal and eye infections in humans. The genetic material of the adenoviruses is not incorporated or transient into the host cell's genetic material. The DNA molecule is left free in the nucleus of the host cell, and the instructions in this extra DNA molecule are transcribed just like any other gene. These extra genes are not replicated when the cell is about to undergo cell division. As a result, treatment with adenoviruses will require re-administration in a growing cell population.
Although the absence of integration into the host cell's genome should prevent the type of cancer seen in the severe combined immunodeficiency trials. एडिनोवायरसेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम है जो रेस्पिरेटरी इंटेस्टिनल या फिर आई इन्फेक्शंस कॉज करते हैं ह्यूमंस में। जेनेटिक मटेरियल एडिनोवायरसेस का होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं होता, बल्कि डीएनए मॉलिक्यूल फ्री रहता है न्यूक्लियस में होस्ट सेल के, और इसकी इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसक्राइब होती है लाइक एनी अदर जीन। ये एक्स्ट्रा जीन्स रेप्लिकेट नहीं होती जब सेल रेप्लिकेट होता है या जब सेल डिवीजन से गुजरता है, जिसके नतीजे में एडिनोवायरसेस के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो री एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है ग्रोइंग सेल पॉपुलेशन के अंदर। एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन होस्ट सेल जीनोम में प्रिवेंट करती है कैंसर्स को या एडवर्स इफेक्ट्स को। Adeno-associated viruses are also used as vectors, and adeno-associated viruses are small single-stranded DNA that insert genetic material at a specific point on chromosome 19, causes no known disease, and it does not trigger patient immune response. It has low inflammation capacity. A gene is always on, so the protein is always being expressed, possibly even in the instances when it is not needed. Hemophilia treatments are the example. For example, a gene-carrying vector could be injected into muscle, prompting the muscle cells to produce factor 9 and thus prevents bleeding. A study by Wilson and Kathy High in the University of Pennsylvania shows that patients have not needed factor 9 injections for more than a year. एडिनो-एसोसिएटेड वायरसेस स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं जिन्हें जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंसर्ट किया जाता है एक स्पेसिफिक पॉइंट में क्रोमोसोम 19 पर। ये कोई नॉन डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, तो पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करते हैं। लो इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है इनमें और जीन हमेशा ऑन रहती है, इसलिए प्रोटीन हर वक्त बनती रहती है, जीन एक्सप्रेस होती रहती है, पॉसिबली उन इंस्टेंसेस में भी जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। हीमोफीलिया ट्रीटमेंट एक एग्जाम्पल है जिसमें जीन वेक्टर कैरिंग जीन इंजेक्ट होती है इनटू मसल सेल्स प्रॉम्प्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फैक्टर 9 को, जो प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग को। The next in line are herpes simplex viruses. Herpes simplex virus has a number of advantages as a vector for delivering a specific gene to the nervous system. These include its large size, wide host range, and its ability to establish long-lived asymptomatic infections in neuronal cells, in which a specific region of the viral genome continues to be expressed. Unfortunately, the large size of this virus and difficulty in manipulating it has led to its use as vector, lagging behind that of other smaller viruses such as the retroviruses. In addition, the virus's ability to replicate lytically in the brain under some circumstances causing encephalitis has led to fears about its potential safety for ultimate use in humans. So herpes simplex virus and herpes simplex type 1 virus के number of advantages as a vector for delivering a specific gene to the nervous system, जिनके अंदर एक्चुअली इनका लार्ज साइज है, वाइड होस्ट रेंज है, उनकी एबिलिटी है लॉन्ग लिव्ड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस को इस्टेब्लिश करने के न्यूरोनल सेल्स के अंदर। यहाँ पर स्पेसिफिक रीजन वायरल जीनोम का रिक्वायर होता है और कंटिन्यूअली एक्सप्रेस होता है। फिर फॉर्चुनेटली इनका लार्ज सेल डिफिकल्टी कॉज करते हैं मैनिपुलेशन, और इसकी वजह से इनका वेक्टर लैगिंग यूज़ लैग बिहाइंड है, और स्मॉलर वायरसेस मौजूद हैं रीट्रो वायरसेस की फॉर्म में, तो वो रिप्लेस कर देते हैं herpes simplex वायरस के यूज़ को। There are non-viral gene transfer strategies as well. Some of these are
shown over here with advantages and disadvantages. Like naked DNA can be used. It has an advantage that no special skill is needed and it is easy to produce, while an disadvantage of low transduction efficiency and transient gene expression. There are physical methods as well, which includes microinjection, gene gun, electroporation, sonoporation, laser irradiation, and magnetoinjection. Each have its advantages and disadvantages. Microinjection has an advantage that up to 100% transduction efficiency can be shown through nuclear injection, but it requires highly specialized skill for delivery and it is limited to ex vivo delivery. Gene gun is easy to perform and effective immunization with low amount of DNA can be attained, but it has poor tissue penetration. Electroporation has high transduction efficiency, but the disadvantage exists is of its toxicity. It causes tissue damage, transient gene expression, and it is highly invasive. Sonoporation is a method well tolerated for other applications, but it do contain a disadvantage of transient gene expression and toxicity is not yet established. Laser irradiation can achieve 100% transduction efficiency, but special skills and expensive equipment are necessary. Magnetofection is a safety of method established in the clinic, but it has poor efficiency with naked DNA. There are two chemical methods which are used, liposomes. They are easy to produce and fusion liposomes improve transduction efficiency, but a disadvantage also occurs of transient gene expression, toxicity, and mildly immunogenic. Cationic polymers can be used as vectors. They are easy to manipulate for targeting, but they do have a disadvantage of toxicity and mild immunogenicity and transient gene expression. So there are certain problems or potential risks associated with gene therapy. A gene can easily be inserted directly into your cell, rather it usually has to be delivered using a carrier called vector. The most common gene therapy vectors are viruses because they can recognize certain cells and carry genetic material into the cell's gene. Researchers remove the original disease-causing gene from the viruses, replacing them with the genes needed to stop disease. The techniques used presents the following risks, like unwanted immune reactions. Your body's immune system may see the newly introduced viruses as intruders and attack them. This may cause inflammation and, in severe cases, organ failure. The other is targeting the wrong cells. Because viruses can affect more than one type of cells, it is possible that the altered viruses may infect additional cells, not just the targeted cells containing mutated genes. If this happens, healthy cells may be damaged, causing other illnesses or diseases such as cancer. Infection caused by the virus. It is possible that once introduced into the body, the viruses may recover their original ability to cause disease, and possibility of causing a tumor. If the new gene gets inserted into the wrong spot in your DNA, there is a chance that the insertion might lead to tumor formation. So gene therapy के कुछ potential risks हैं. Genes cannot easily be inserted directly into cells, बल्कि delivery carriers require होते हैं gene की transfer के लिए. Most common gene therapy carriers vectors viruses होते हैं, क्योंकि viruses easily recognize कर सकते हैं certain cells को और genetic material को carry कर सकते हैं into the cells genes. Researchers remove करते हैं original disease causing gene को viruses से और उन्हें replace कर देते हैं with gene needed to stop the disease. इस technique के कुछ potential risks हैं. पहला रिस्क अनवांटेड इम्यून सिस्टम रिएक्शन है. बॉडी का इम्यून सिस्टम
अनवांटेड रिएक्शन कॉज कर सकता है जब वो एक न्यूली इंट्रोड्यूस वायरस को देखता है और उसे एज इंट्रूडर लेता है और उसको अटैक करता है, जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है जिसकी वजह से, और सिवियर केसेस के अंदर ऑर्गन फेलियर हो सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज, रॉन्ग सेल्स को टारगेट करना है, क्योंकि वायरसेस अफेक्ट करते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल को, तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ऑल्टर्ड वायरसेस इन्फेक्ट करें एडिशनल सेल्स को और जो कि टारगेटेड सेल्स नहीं हैं और उनमें म्यूटेटेड जीन्स प्रेजेंट हैं। अगर ये होता है तो हेल्दी सेल्स कैन बी डैमेज कॉजिंग अदर इलनेसेस लाइक डिजीजेस such as cancer. The third unwanted effect that can be occurred is infection caused by the virus. ये possibility है कि अगर वायरस इंट्रोड्यूस हो बॉडी के अंदर तो वायरस रिकवर कर ले अपनी ओरिजिनल एबिलिटी को टू कॉज डिजीज़। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉजिंग अ ट्यूबर ऑल्सो एग्जिस्ट कि एक नई जीन जब इंसर्ट होती है इनटू द रॉन्ग स्पॉट इन अ डीएनए, तो देयर इज़ अ चांस दैट the inserted gene might lead to tumor formation. So let's conclude the whole lecture. Gene therapy is an experimental form of treatment that uses gene transfer of genetic material into the cell of a patient to cure the disease. And the idea is to modify the genetic information of the cell of the patient that is responsible for a disease and then return the cell to normal conditions. Transfer of genetic material is done commonly by using viral vectors that use their own biological capacities to enter the cell and deposit the genetic material. Both inherited genetic diseases and acquired disorders can be treated with gene therapy, and examples of disorders are primary immune deficiencies, where gene therapy has been able to fully correct the presentation of patients, or cancer, where the gene therapy is still at the experimental stage. So let's call it a day. Thank you for watching this video. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.